हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी पिलामाने तुम समस्त गोटे बहुत बड़ खुशी खबर जो मैंने मत बारंबार मेसेज दौले कमेंट दौले जे सार आम एरिया बन्या आम एरिया फ्लोड हो सर आमर एफर्टर जाई होनी ठीक से कनेक्टिविटी बा ठीक से कम्युनिकेशन सुविधा ना तो आम सर किपर एडमिशन करूँ तो समस्त को जन देवाई मुझे चाहूँगी कि जे तुम मानकर सेकेंड सिलेक्शन डेट एक्सटेंड हो जाइए 25 तारीख पर्यंत 25 अगस्त एति पर्यंत कौन होना सेकेंड सिलेक्शन डेट एक्सटेंड होती तुम्हें माने 25 तारीख भितर आराम से जाई एडमिशन करि पारिबो बुझी पारल कथा कौन आउ जेहेतु एटा हला कौन ना डेट एक्सटेंड हो जाइए तो ठीक से ही भाव में तुमर स्पॉट बा जोटा रहा वेटिंग है डिले हम ता माने देख तुम वेटिंग आसबार के 25 तारीख रे वेटिंग रैंक आसबार तार सब प्रोसेस होबार तो ये वर्तमान समय ये डिले हम ता माने न्यू टाइम लाइन आसो आउ थे कहीं आसो कारण तुम जेहेतु एटा डेट एक्सटेंड होती 25 तारीख को तो एबे वर्तमान समय देखा गले तो 25 तारीख रे आसबार कौन ना तुम स्पॉट रे जो रैंकटा आसबार वेटिंग रैंकटा आसबार सब प्रोसेस होबार तो वर्तमान समय से सब जिनस स्टॉप हो तो 25 तारीख पर अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी हिसाब रे जति 25 तारीख पर जो छुआ मैंने एडमिशन कर सारी 25 तारीख भितर से वैकेंसी हिसाब रे तुम कौन कर ना शो कर तुम तो आमर वेटिंग बा वेटिंग रैंक आसो तुम एप्लाय करने दिज्व तुम जो सिलेक्शन हो तुम मेरिट लिस्ट बाहर देखिए एडमिशन कर वेटिंग बा स्पॉट पाई बुझ कथा कौन तो से देखा गले तुम वेटिंग बा स्पॉट पाई न्यू टाइम लाइन आउ थे आसो देख तुम को देखे दूसरी फास्ट तुम जो सेकेंड सिलेक्शन डेट जो एक्सटेंड हो देख पिला माने आम जो साम्स पीजी साइट को जाऊँ देख लिखाई कौन ना देख लिखाई तो प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट हेज बीन पब्लिश ये सब जिन अच्छी देख ये देख अच्छी कौन इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग फ्लड सिचुएशन अक्रॉस द स्टेट राज्य रे जो बन्या परिस्थिति देखिकी द लास्ट डेट फॉर द एडमिशन अपडेशन हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 25/8/2026 5 PM माने 25/8/2026 5टा पर्यंत संध्या 5टा पर्यंत कौन कराई एक्सटेंड कर दिखाई all higher education institutions are requested to complete all necessary admission related formalities within the extended timeline. The revised timeline will be issued shortly. बुझ कथा कौन तो यहीटा वर्तमान समय कौन ना एक्सटेंड होती 25/8/2026 को आउ सबू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कौन कराई रिक्वेस्ट कराई कौन ना सबू किसी एडमिशन रिलेटेड जो फॉर्मालिटीज अच्छी से गुड़ा को जे माने जो टाइम लाइन अच्छी 25/8 भितर सब सारियापाई आउ रिवाइज टाइम लाइन एडमिशन टाइम लाइनटा कौन हम ना बहुत सर्टली कौन हम ना इश्यू करा जो रहा तुम स्पॉट बा वेटिंग रिगार्डिंग बुझल कथा ता माने तो माने एवडू जानी पारथुबो जे कोन तुम समस्तंकर जो पिला मानकर वर्तमान समय सेकेंड सिलेक्शन आसीची से मानकर डेट तुम 25/8/2026 पर्यंत एक्सटेंड होती आ भितर से कौन करें एडमिशन भी करें जदि तुम्हें माने एडमिशन करी ना बुझे पारा कथा को तापर देख नेक्स्ट गोटे जिनस हूँ कौन ना तुम मैंने सब जिन जो अलॉटमेंट जो सब जिन तुम देखिपर चेक कर तुम सिलेक्शन हो कि ना आराम से चेक कर आ समस्त गोटे जिनस कहूँ जो पिला मानकर सेकेंड सिलेक्शन सेकेंड सिलेक्शन आसी से माने प्लीज एडमिशन कर दियो कहीं कहूँ कारण ये कारण सेकेंड सिलेक्शन तुम मैंने जो छाड़ी दौच ताले तुम स्पॉट रे वर्तमान समय गोटे क्लीयर कट गाइडलाइन आसी ना जी कौन ना गोटे तो गाइडलाइन आसी जो मैंने एडमिशन नहीं सारी से अप्लाई करेंगे जो मैंने एडमिशन पाई ना से अप्लाई करेंगे आउ जो मैंने 1 नंबर प्रिफरेन्स अच्छे से छाड़देला आउ समस्त अप्लाई करेंगे किंतु लिखा है जे कौन ना जो मानकर अलॉटमेंट आसी किंतु से माने कौन सी जगह एडमिशन करना फ्रीज करना से सिचुएशन कौन हम बुझ कथा कौन तो से माने आउट हो सबकि जो प्रोसेस रु आउट हो बुझ कथा कौन सबकि प्रोसेस रु से आउट हो तो यहाँ मेंशन अच्छी तो सही हिसाब देखा गले तुम मैंने भी इलिजिबल नुह कौनटा ना आमर जो स्पॉट बा वेटिंग तो से जदि तुम आसूची कौन ना सेकेंड सिलेक्शन तुम मैंने आराम से एडमिशन कर दियो एडमिशन कर सारिकी तुम मैंने इलिजिबल हम जे कौन ना स्पॉट है
ତମର ଯଦି 1 ନମ୍ବର କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତଳ ସବୁ କଲେଜରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି। ସେଠି ଫ୍ରିଜ୍ ମାରିକି ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବ ବା ସ୍ପଟ୍ ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ପାଇଁ ଆରାମସେ ପକାଇ ପାରିବ। ଭାବନି ଯେ କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ପକାଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ, ଆରାମସେ ପକାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କରୁଛ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କ'ଣ ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଯେ କ'ଣ ନା ମେ ବି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲି କିଛି କରିନଥିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନଥିଲେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି, କାରଣ ସେ ଲେଖିଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଆ ଉପରେ କୌଣସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବ ବା ଯଦି ତୁମେ ଫ୍ରିଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ହେବ ଟୋଟାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ହୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ। ତାହା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଫେଜ୍ 1ର ହୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇ ୱେଟିଂ ସବୁ ମିଶେଇକି, ବୁଝଛ ତ, ସେଥିରେ ବି ମାନେ ଆଉ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦିଅ, କରିଦେଇକି ତୁମେ ଆରାମସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏତେବେଳେ କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମେନସନ୍ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କି ନୁହଁ, ବୁଝିଲ କଥା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍ ଆମର ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ କେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ ସ୍ପଟ୍ ବା ୱେଟିଂ ପାଇଁ, ବୁଝିଲ କଥା କ'ଣ। ଆଉ ସେଇଦିନ ବି ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ଆସିବ କ'ଣ ବା ସ୍ପଟ୍ ବା ୱେଟିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ସେଇଦିନ ତୁମର ଆରାମସେ ଜାଣିବ ଯେ କ'ଣ ତୁମମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କି ନୁହଁ, ବୁଝିଲ କଥା କ'ଣ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି 25/8/2026କୁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହ ତୁମମାନେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ବା ୱେଟିଂ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତୁମର 25 ତାରିଖ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ 25 ତାରିଖ ଆସିବ ନାହିଁ ହେଲା, 25 ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବ, ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ। ଯେହେତୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସାରିବେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହିସାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତୁମର ଆସିବ ୱେଟିଂ ବା ସ୍ପଟ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ପଟ୍ ବା ୱେଟିଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ହେବ ନା ଡିଲେ ହେବ, ଡିଲେ ଏକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ ଡିଲେ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାର ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ସ୍ପଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ମାନେ ୱେଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କ, ତାପରେ ୱେଟିଂ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଫିଜିକାଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ୱେଟିଂ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟାର ହୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୁମର 8-9 ଭିତରେ ସରିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହେଲା। ତ ଯଦି ଯେହେତୁ 1-2 ଥିଲା ନା ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇ 8-9 ଭିତରେ ସରିଯିବ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଲା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବ, ଅଧିକା ଦିନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ମାସର ହିଁ ଯାହା ହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ୱେଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼। ଏଇ ମାସ ୱେଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କ ମେ ବି ଆର ମାସର ଆପ୍ଲାଏ କି ତାପରେ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କ'ଣ ହେଲା ମେ ବି ତୁମର ଯେଉଁ ରହୁଛି 5-6 ଆଡ଼େ ମେ ବି କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରେ, ବୁଝିଲ କଥା କ'ଣ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କ ବା ୱେଟିଂ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଯେ ତାହା ଯାହାକି ତୁମର 25 ତାରିଖ ଆସିବାର ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଯେହେତୁ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ଯେହେତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଟା ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି ବା ଡିଲେ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ୱେଟ୍ କର, ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଦ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ସର୍ଟଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ କ'ଣ କର ୱେଟ୍ କର ନେକ୍ସଟକୁ ହେଲା। ତ ଏତିକି ରହିଲା ଡିଟେଲ୍ସ, ଧନ୍ୟବାଦ।